Good afternoon to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. So after the discussion about the atherosclerosis, after the discussion about what is it, what are the various diagnostic methods that are available for the treatment of atherosclerosis, what are the various diagnostic strategies, what are the causes. Now we are going to discuss about the treatment strategies. What are the various treatment options that are available for the patient suffering from the atherosclerosis. The number of medications and number of various therapies other than the medicines are available for the treatment of patients suffering from the atherosclerosis. The first type of medicines that we can use for the treatment of atherosclerosis patients are the cholesterol lowering medications. In one of my video, I have discussed that increase in the level of cholesterol, increase in the level of fat or lipids in the body is one of the major cause behind the atherosclerosis. So one of the major thing that we have to focus is to decrease or to lower the level of cholesterol in the blood of a patient. So for that we can use the number of medications, including the statins. These are the one of the categories of a drug, and fibric acid derivatives. So these are the two types of the pharmacological drugs that we can use in the patients to lower or to reduce the level of cholesterol in the patients. Other than these things is that we already know whenever the patient suffers from the atherosclerosis, there are huge chances of the formation of the clot in the blood arteries, and that clot can be the one of the reason behind the blockage of the arteries and can be the one of the reason behind the heart attack. So our next strategy is to reduce the chances of the production of that blood clot. So we can use the antiplatelet drugs and the anticoagulants such as aspirin. Okay, and the third things, we can use the drugs which to lower the blood pressure. As we know, when the patient suffer from the atherosclerosis, ultimately there are huge chances that patient का जो blood pressure है वो rise हो सकता है. So ultimately we have to use certain drugs, and the major drugs which are used for the lowering the blood pressure, they are the beta blockers drug, जो हमारी जो हार्ट बीट होती है उन्हें स्लो कर देते हैं. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कैल्शियम की एंट्री को रोकते हैं और कैल्शियम मूव नहीं करता, जिससे जो होता है हार्ट मसल की जो कॉन्ट्रैक्शंस रहती है वो स्टॉप हो जाती है और ब्लड का प्रेशर भी रिड्यूस हो जाता है. Other than these things, we can also go for the usage of the diuretics drugs to lower the blood pressure inside the patient. And the last drugs which we can use to prevent the narrowing of arteries are the angiotensin enzyme inhibitors. Okay, which are the one of the major angiotensin convertase enzyme is the one of the enzyme which causes the narrowing in the arteries. So these all are the medications which are used for the ट्रीटमेंट ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस. हमारा मेजर टारगेट क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसे कम करना, जो कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस है उसे रोक लेते हैं, या फिर जो आर्टरीज में क्लोट बनने के चांसेस हैं उसको रोक लेना. सो दिस आर द थ्री वी कैन से दैट द टारगेट्स ऑन विच जिसपे हम टारगेट करते हैं whenever we are discussing about the whenever we are treating the patient suffering from the atherosclerosis disorder. After that, let's focus on the next things, that is a surgery. Other than the drugs, we can also go for the other things, surgery. So in certain cases surgery may be necessary अगर symptoms काफी severe हैं और अगर medicines are not able to show their effects because of the severity of the narrowing of the arteries or of the blockage of the arteries. Okay, so if the muscles or the skin tissues are endangered, so possible surgeries जो हम use कर सकते हैं, first is bypass surgery. I think आप सभी ने इस surgery के नाम के बारे में जरूर सुना होगा. So this surgery is one of the डिजीज जिसमें ये यूज की जाती है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस बाईपास का मतलब होता है कि अगर सीधे रास्ते से हम अपने बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ब्लड नहीं पहुंचा पा रहे, तो इधर एथेरोस्क्लेरोसिस है, सीवियर ब्लॉकेज है तो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा, तो हम क्या करते हैं, हम जो होते हैं अलग रास्ते से बाईपास रास्ता बना लेते हैं. ए विसल्स फ्रॉम elsewhere in the blood or synthetic tube is used for the diverting the blood around a narrowing or around a blocked arteries. ठीक है, कहीं से अनदर से ब्लड वेसल्स के लिए रास्ता निकाला जाता है. सो दिस इज द बाईपास सर्जरी. ओके, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, अगर आर्टरीज में ब्लड क्लोट बन चुका है, सो हमें उस लाइटिक का मतलब क्या होता है, ब्रेक, थ्रोम्बस का मतलब होता है ब्लड क्लोट,
सो हमारा सेकंड टारगेट क्या होगा, हम उस ब्लड क्लोट को डिसॉल्व कर दें, उस ब्लड क्लोट को ब्रेक कर दें. सो थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी is used for dissolving the blood clot by injecting a drug into the affected artery. Okay, so this is one of the treatment, these are the two treatment strategies that we can use in the patient who are suffering from the atherosclerosis disorder. Clear? So these are the two therapies that we can use in the patient. Other than this thing, other surgery, that is angioplasty. मैंने अपनी एक वीडियो में इसके बारे में बात भी किया था. एंजियोप्लास्टी में क्या कहते हैं, ट्यूब और कैथेटर और बैलून लिया जाता है जिससे जो आर्टरीज जो नैरो हो चुकी है उनको एक्सपैंड कर दिया जाता है. सो दैट इज एंजियोप्लास्टी. एक ट्यूब जिसको हम कैथेटर कहते हैं और एक बैलून विच इज यूज टू expand the arteries, used to increase the area of the arteries. Endarterectomy, this is the surgical removal of the fat deposits. क्योंकि फैट्स लेवल बढ़ जाना वो प्लेक बना लेते हैं तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं. लास्ट सर्जिकल प्रोसेस that we can use in the patient is atherectomy. This is a non-surgical procedure. This is a not surgical procedure. इसमें हम कैथेटर एक शार्प ब्लेड लेते हैं जिसके एंड पे, तो उसके थ्रू प्लेक को रिमूव करते हैं फ्रॉम आवर आर्टरीज. सो in our this video I have discussed about the various treatment strategies that we can use in the patients suffering from the atherosclerosis disorder. We have discussed about the various types of the drugs, we have discussed about the cholesterol lowering drugs, we have discussed about the blood pressure lowering drugs को use कर सकते हैं, and the drugs which are used to break down the blood clot. Other than these things, if the symptoms in the patients are severe, in that case we cannot use the medicines, we have to go for the surgical procedures, and we have discussed about the various surgical procedures in this video. So angioplasty, okay, bypass surgery, thrombolytic therapy, okay, atherectomy or angioplasty, these are the certain treatment or certain surgical procedures which are available for us, which can be used in the patient suffering from the atherosclerosis disorder. So I think आप सभी को इन सभी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में समझ में आया होगा. आई थिंक अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई माय बेस्ट to solve your queries related to this atherosclerosis. Thank you so much. We will meet in the next video with another important disease के बारे में डिस्कशन करने के लिए. Thank you so much. Keep supporting Inspire Pharma.